अस्सलाम अलैकुम। आज के लेक्चर में खुश आमदीद। हम आप सबको यहाँ देखकर बहुत पुरजोश हैं। आज हम पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी के बारे में सीखेंगे। अपनी किताबों का यूनिट नंबर 1 सफ़ा 1 ता 2 खोले। एक दिलचस्प और बसीरत अंगेज सेशन के लिए तैयार हो जाएं। बराहे करम पहले सबक को गौर से सुने और पढ़ें। O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. Al-Baqarah 2:153. By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from ours. Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks, and action with patience and calmness. The life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a superb example of tolerance. It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. Truly, he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. The Holy Quran describes him as Rahmatul lil Alameen, a mercy unto the whole mankind and the universe. While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. They lived in a valley called Shab Abi Talib. There was scarcity of food and water. The believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years. During this situation Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge. Even after he had conquered Makkah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught his followers to remain tolerant. After the conquest of Makkah, the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. No house was robbed, no man or woman was insulted. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. O you who have believed, लोगों जो ईमान लाए हो, seek help through patience and prayer. सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। Indeed, Allah is with the patient. Al-Baqarah 2:153. बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-बकरा 2:153। By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from ours. रवादारी से हमारा मतलब इन लोगों के साथ मुंसिफाना और मारूजी रवैया है जिनका तर्ज जिंदगी हमसे मुख्तलिफ है। Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks, and action with patience and calmness. रवादारी वो खूबी है जो इंसान को सब्र और सुकून के साथ रवैये, मनफी तबसरों और अमल को बर्दाश्त करने के काबिल बनाती है। The life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a superb example of tolerance. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रवादारी की आला मिसाल है। It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. ये उसकी बर्दाश्त है कि उसे अपने बदतरीन दुश्मनों को मुआफ करने दे। Truly, he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. दर हकीकत वो तहम्मुल, दरगुजर, सब्र और हमदर्दी का मजहर है। The Holy Quran describes him as Rahmatul lil Alameen, a mercy unto the whole mankind and the universe. कुरान पाक ने इसे रहमत अल-आलमीन पूरी बनी नौ इंसान और कायनात के लिए रहमत के तौर पर बयान किया है। While preaching Islam in Makkah, मक्का में तबलीग इस्लाम के दौरान the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. कुरैश ने उन्हें और उनके खानदान बनु हाशिम को बेदखल कर दिया।
They lived in a valley called Shab Abi Talib. वो शब अबी तालिब नामी वादी में रहते थे. There was scarcity of food and water. वहाँ खुराक और पानी की कमी थी. The believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years. मोमिनीन के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था और वो 3 साल तक इंतहाई सख्त जिंदगी गुजार रहे थे. During this situation Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge. इस हालत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून और बुर्दबार रहे और कभी किसी किस्म का बदला लेने के बारे में नहीं सोचा. Even after he had conquered Makkah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught his followers to remain tolerant. मक्का को फतह करने के बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को रवादारी का दर्स दिया. After the conquest of Makkah, फतह मक्का के बाद the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. मुसलमानों की फौज आजिज़ी और अमन के साथ मक्का में दाखिल हुई. No house was robbed, no man or woman was insulted. कोई घर लूटा नहीं गया. किसी मर्दा औरत की तौहीन नहीं की गई. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तमाम आबादी को आम मुआफ़ी दे दी. इल्म को बढ़ाना, आगाही को बढ़ाना और कीमती तज्जियों को हासिल करना चाहते हैं तो सेक्टम टीवी को देखें. तालीम, आगाही और मालूमात के लिए आपकी आखिरी मंजिल. Don't miss out on this transformative experience. Subscribe to Sectum TV now.